बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन अबाउट द लीनियर सिस्टम्स। अब हम देखेंगे कि स्टेट स्पेस डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। स्टेट स्पेस बेसिकली सिस्टम मॉडलिंग की एक टेक्निक है और इसमें हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मैट्रिसेस। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मौजूद हो सिस्टम में, ताकि वो इंटरनली एज अ लम्प्ड सिस्टम को शो किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिस्टम बनाता हूँ, सर्किट, इसमें ये कैपेसिटर, देन आई हैव अनदर कैपेसिटर और अनदर रेजिस्टर, कैपेसिटर। सो ये अगर आपके पास इस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट्स मौजूद हैं, तब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके थ्रू करंट, इसके क्रॉस वोल्टेज, करंट, ओके, वोल्टेज। सो हम वोल्टेज और करंट्स की रिस्पेक्ट से इंडिविजुअल पॉइंट्स के ऊपर शो कर सकते हैं। सो वी हैव कंपोनेंट्स। असल में जो लम्प सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स की कुछ टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली उसकी इंटरनली जो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी वजह से आपके पास आती हैं। ठीक है, तो हम उसको स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आमतौर पे ये एनर्जी जो रिप्रेजेंट है उसको करते हैं। सो कमिंग बैक हियर, नॉट डिस्कसिंग मोर ऑन लम्प सिस्टम्स। हमने पहले बहुत इसको काफ़ी डिस्कस भी किया था पिछली क्लासेस में। मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट कि सिस्टम की मॉडलिंग हम स्टेट स्पेस से कैसे करते हैं। सो एनीवेज, कुछ टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम इंडिविजुअली उसकी जो इंटरनल स्टेट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्स, और इसकी जो इनपुट सिग्नल है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इंटरनल स्टेट्स होती हैं, उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका आउटपुट है, आउटपुट ये जिसको आप रिस्पांस कहेंगे, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनमें डायनेमिक्स हो, यानी देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट स्टेट। अदरवाइज जो कांस्टेंट है वैल्यू, उसको हम स्टेट के तौर पे नहीं लेते। सो वी हैव x डॉट इक्वल्स टू dx अपॉन dt। अब if we have a p inputs and q output system, यानी नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो p हैं और नंबर ऑफ आउटपुट जो हैं वो q हैं, देन जो ये u वेक्टर होगा, ये चूँकि u p इनपुट्स हैं तो ये एक वेक्टर बनेगा p/1 का, और आउटपुट्स अगर q हैं तो और जो y वेक्टर है वो बनेगा, उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी, डायमेंशन जो होगी q/1 वेक्टर होगी। ठीक है, तो वेक्टर और मैट्रिसेस स्टेट स्पेस का मतलब ये हुआ कि एक चीज़ जो सामने आई वो ये है कि ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स एन इक्वेशन ऑफ वेक्टर एंड मैट्रिसेस। ठीक है, ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसके अंदर इक्वेशन या रिलेशनशिप है कि जिसमें आपके पास वेक्टर्स होते हैं और मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, और बेसिकली उन वेक्टर्स और मैट्रिसेस के अंदर ये सिग्नल्स और करस्पॉन्डिंगली इंटरनल वैल्यूज आएंगे, देखेंगे अभी हम। सो इन ऑर्डर फॉर द मैट्रिसेस इन 2 पॉइंट, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो मैट्रिसेस हैं टू बी कंपैटिबल, तो फिर ए, बी, सी और डी जो है उनकी फिर अप्रोप्रिएटली वैसी डायमेंशंस बनेगी टू मेक श्योर कि आपके पास जो p/1 इनपुट और आउटपुट की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, p इनपुट्स और q आउटपुट्स। सो a जो है वो होता है n/n का, b जो है मैट्रिक्स वो है आपका n/p, q is c is your the matrix with q/n,
और जो डी मैट्रिक्स है वो क्यू बाय पी मैट्रिक्स बनेगा. नाउ these four matrices they are all functions of time, यानी ये टाइम वैरिंग है. तो आप ए को ए टी समझें, बी को बी टी समझिएगा, ठीक है. सी ए इज बेसिकली सी टी एंड डी इज बेसिकली डी टी. सो एंड इट इज written here by mentioning by this t के ये वैरिंग है, टाइम के साथ वेरी करेंगे. एंड इक्वेशन 2.6 में बेसिकली कितनी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की, इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ODEs हैं, और सो देयर आर n डिफरेंशियल इक्वेशंस. और 2.7 में आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं ऑफ नंबर q numbers. This set of two equations will be called an n-dimensional state space equation, या इसको हम simply state equation भी कहते हैं, इन दोनों को मिला के. For distributed systems, the dimension is infinity and the two equations cannot be used. तो अगर lumped नहीं है distributed, जैसे पावर लाइन की है, तो वहाँ पे हम स्टेट स्पेस नहीं इस तरह से बना सकते, या अगर हम बनाए तो वो बहुत ही अप्रॉक्सीमेटेड होगा. तो इंटरनल कंपोनेंट्स अगर इनफाइनाइट हो तो हम वी कैन नॉट डिसाइड कि तो n if n goes to infinity for distributed systems, तो आप वहाँ पे स्टेट स्पेस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. Only lumped systems can be represented by state space. The input-output description 2.5 में जो हमने देखी थी was developed from the linear condition. The development of the state space equation from the linearity condition, however, is not as simple and will not be attempted. We will simply accept it as a fact. Continue करते हैं linear time invariant. अब वो जो हम time variation की बात कर रहे थे, linear systems की एक सबसे यूजफुल जो फॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम्स. टाइम इन्वेरिएंस का मतलब क्या है? टाइम इन्वेरिएंस का मतलब ये है कि आपके पास जो टाइम है, जो वैल्यूज़ हैं उसकी चेंज नहीं होगी, यानी कि ए ऑफ टी जो है ये बेसिकली ए हो जाएगा, राइट. सो अ सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इन्वेरिएंट इफ फॉर एवरी इनपुट स्टेट आउटपुट पेयर, अगर कोई भी आपके पास ये इनपुट स्टेट आउटपुट पेयर है और दिस इज़ द होल सॉल्यूशन, ठीक है. ये कि इनिशियल कंडीशन ये है, इनपुट सिग्नल ये है. इफ इनिशियल कंडीशन इज दिस ऑफ स्टेट, और जो आपके पास इनपुट सिग्नल है इज दिस, एंड दिस इज योर आउटपुट वैल्यू, एंड एनी टाइम टी वी हैव, तो किसी भी टाइम अगर हम एक इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, यानी कोई टाइम ऐड कर दें, टी नॉट अगर आपके पास, इसका मतलब ये है कि टी नॉट अगर इफ टी नॉट वॉज इक्वल्स टू 0 और फिर अचानक हम किसी टी टाइम को ऐड कर दें जो कि है लेट्स से 2 सेकेंड्स, तो क्या होगा कि अगर आप इसी वैल्यू को शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा आगे जाके अप्लाई कर दें, 0 सेकेंड्स के बजाय आप इसको अप्लाई कर रहे हैं 2 सेकेंड्स के ऊपर. एंड द सेम गोज फॉर यू ऑफ टी, जो आपके पास यू ऑफ टी सिग्नल था पहले, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, इसको आपने स्टार्ट कर दिया है दिस इज 0 2 सेकेंड्स के, अब आप यहाँ अप्लाई कर देते हैं. इफ दिस इज यू ऑफ टी देन दिस इज यू ऑफ टी माइनस कैपिटल टी, या यू ऑफ टी माइनस 2. जब आप इस तरह से स्टार्ट कर देंगे तो आउटपुट पे क्या होगा? तो आउटपुट इज़ वेरी सिंपल, आउटपुट में वही आउटपुट होगी लेकिन उसको आप शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, एज इट इज़. जो भी आउटपुट आपके पास थी, जो पहले जो आ रही थी, आप उसको शिफ्ट कर देंगे एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल. तो टाइम शिफ्टिंग, तो टाइम शिफ्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है. कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ टाइम शिफ्ट होगा, नथिंग चेंज. सो नो चेंज इन शेप, just time shift, ठीक है. So it means that if the initial state is shifted to some new value t plus t naught, t naught plus t, and the same input waveform is applied at t plus t naught plus t instead of from t naught, then the output waveform will be same. Output waveform same है, ठीक है, except that it starts to appear after time. तो आप देखें तो कॉमन चीज़ क्या है? तो सब में शिफ्ट आ जाएगा. तो इनपुट स्टेट में इफ देयर इज अ स्टेट शिफ्ट इन स्टेट,
shift in state, shift in the signal will result in same shift in the output y. ठीक है, so this is the main thing. तो linear time invariant इनको कहते हैं LTI systems, linear time invariant systems. So in other words, if this initial state and the input are the same, no matter at what time they are applied, the output waveform will always be the same. And therefore, for time invariant systems, we can always assume without loss of generality that T naught equals to 0. If a system is not time invariant, it is said to be time varying, जो हमने पहले देखा. Now note that the time invariance is defined for systems, not for signals. ये important चीज़ है कि time invariance जो है वो signals के लिए नहीं है, systems के लिए है. Signals are mostly time varying. क्योंकि अभी आपने देखा हम normally भी draw करें तो this is sin t for example, it's time varying. If a signal is time invariant, such as ये constant signal होगा अगर time invariant system, then it is quite simple. ठीक है, तो constant system जो होते हैं, constant values या signals are time invariant. ठीक है. Now the characteristic of time invariant systems must be independent of the time. For example, एक network हम देखते हैं 2.2 next में, इसमें is time invariant if Ri, Ci and Li are constants. ठीक है, figure 2.2 will come next. 2.2 was I think in the beginning. Let's go and see. So this is figure 2.2 और इसमें अगर आपके पास C, R और L जो हैं ये सारे if they are time invariant constants हैं, अगर if they are all constants, then this whole system is time invariant. ठीक है, the whole system will be time invariant. Okay, so let's move further. So we were talking about okay, ठीक है, so this network 2.2 just I showed you is time invariant if R, I, Ci and Li are constants. Now some physical systems must be modeled as time varying systems. For example, burning rocket. अब burning rocket जो है उसमें fuel जैसे जैसे burn होता जाएगा उसका weight, उसका mass जो है वो कम होता जाएगा. So this is a time varying system. And बाकी भी systems आपके time varying है, लेकिन वो इतनी देर से उनमें change आता है, इतना slow change होता है कि हम उसको time invariant ही consider करते हैं. ठीक है, so very slow, इसको यूँ लिख लेता हूँ कि very slow time varying systems can be treated as time invariant. ठीक है, systems. So although the performance of automobile या कोई सी टीवी सेट may deteriorate over a long period of time, ठीक है, उसकी क्वालिटी हो सकता है कुछ अर्से के बाद, बहुत दिनों के बाद जाके वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा हो. Its overall characteristic don't change appreciably for a couple of years. तो वो बहुत अर्से तक, यानी this may be years, ठीक है, maybe in the span of 12 years कोई चीज़ है जो depreciate हो रही है, बहुत देर से हो रही है. ठीक है, तो आप उसको तकरीबन कांस्टेंट लेते हैं. Thus a large number of physical systems can be modeled as. इसी वजह से डिटेरिएशन अगर बहुत स्लो है तो जो बहुत स्लो डिटेरिएशन है उसकी वजह से ये टाइम वेरिएशन है, तो उसको हम छोटे पीरियड में देखेंगे तो we will consider it as a time invariant system. We can also say that a model of a physical system will be a life will have a life
मॉडल आप अप्लाई करेंगे वो इट विल हैव अ लाइफ, यानी वो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइटली अप्लाई हो, वो एक टाइम पीरियड के ऊपर पीरियड पे ही वो मॉडल जो है मॉडल विल बी वैलिड, मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल टाइम पीरियड या अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, जैसी वो कंडीशंस आउट होंगी तो फिर आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते। सो मॉडल शुड बी रीवैल्यूएटेड एंड रीवैलिडेटेड ऑन द फिजिकल सिस्टम आफ्टर that time is expired, or some performance parameters indicate that the model is deviating or the physical system is deviating from the model. और रिसेंटली जो है आपने एक टर्म है डिजिटल ट्विन, और ये इसी पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम डाटा वी यूज़ डाटा, रियल टाइम डाटा to keep validating validating कि जो मॉडल हमारे पास है वो एक मॉडल इज ओके। ठीक है, एंड AI is also being used for that purpose. We will do some examples on that अगर हमें टाइम मिला तो। ठीक है, so this is important point, keep in mind this is an important slide. Conceptually you should understand whatever it is written here and being discussed. ठीक है, this is important. Okay, so next is in LTI systems. जब linear time invariant system हो गया तब आप input output description कैसे करते हैं? Input output description is simplified in case of linear time invariant systems. ये किस तरह से है कि अगर हम जीरो स्टेट रिस्पांस को देखें लीनियर सिस्टम्स को पहले जो हमने देखा था, तो अब जो आपके पास सिस्टम है दैट विल बिकम लाइक दिस। आप यूँ समझें कि आपके पास टाइम इनवेरिएंट है तो डजेंट मैटर कि किस टाइम पे आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले टाइम एप्लीकेशन वाज इम्पोर्टेंट। अब ये टॉ जो है दिस विल बिहेव जस्ट लाइक जस्ट अ डिले। जब ये सिर्फ एक डिले हो गया तो जब आप डिले के तौर पे अप्लाई करेंगे तो इसका इम्पल्स रिस्पांस भी इसका इम्पल्स रिस्पांस क्या होगा? इसका इम्पल्स रिस्पांस वही होगा कि जिसको आप डिले कर दें। दैट्स वाई हमने टी प्लस एक डिलेड एलिमेंट को ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इफ इट इज़ डिलेड टी टाइम्स डिले हुआ है तो ये भी टी टाइम्स हो जाएगा। सो हमारे पास जो अगर इफ टी इक्वल्स टू 0 तो या आपके पास जो ओवरऑल डिले आया है that will be equals to what? That will be equals to this value t minus tau. So अगर tau पे आप अप्लाई कर रहे हैं it was a delay। ठीक है, जब आप tau पे अप्लाई कर रहे हैं so that will become like, अब मैं अगर यहाँ से अप्लाई करूँ this is delay, this is the a sort of a shift। इसको अगर मैं shift कैलकुलेट करूँ, टोटल shift अगर हम देखें तो this shift will be what? This shift will be equals to what? Tau plus t, or from here from this t it will be equals to what? Shift minus tau। ठीक है, and we have minus tau here। So I just wanted to highlight के जो impact आएगा आपके पास impulse में that will be just this, कि आपके पास जो है ना वही इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा बट दैट विल बी अ डिलेड वन। ठीक है, टॉ और टी का दोबारा से मैं आपको बता दूं किस तरह से है। एज्यूम कि आपके पास टाइम है ये टी एंड यू अप्लाइड एट इनपुट अप्लाइड एट समथिंग, ये इनपुट है u ऑफ टी और ये आपके पास आउटपुट है y ऑफ टी। तो इनपुट को आपने अप्लाई किया किसी टाइम टॉ के ऊपर and the appearance will come at some other time this। ठीक है, टॉ प्लस टी के ऊपर आपके पास थोड़ा सा आउटपुट पे जाके डिले के साथ कुछ डिले है, टॉ टाइम्स का डिले है। तो होगा सिर्फ और सिर्फ ये है कि योर सेम इम्पल्स विल अपेयर बट सो सेम इम्पल्स रिस्पॉन्स बट एट delay of tau seconds। So that's why it will be like this। ठीक है, तो now note that g, t, tau, this is two variable।
एंड GT minus tau, they are both different. इसका आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये why they are different. फंक्शंस डिफरेंट है लेकिन उसको सिंबॉलिकली अभी आप सिर्फ सेम जी से ही यूज़ कर रहे हैं. सो 2.4 जो है दैट विल बी रिड्यूस टू दिस इक्वेशन टी नॉट और टी जी टी माइनस टॉ यू ऑफ टॉ डी ऑफ टॉ, और वी कैन रिप्लेस टी नॉट बाय ज़ीरो. तो आपके पास यहाँ पर जो लिमिटेशन है, लिमिट जो है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होती है. सेकेंड क्वांटिटी, सेकेंड क्वालिटी कैन ईजिली बी वेरीफाइड. दिस इज क्वांटिटी. Second quantity can easily be verified by changing the variable. So what is this? What is this now? Think about it. What is this? This is basically called convolution integral. Okay. So unlike the time varying case where g was a function of two variables, now g is a function of only a single variable. और ये time invariant case है. ठीक है, time invariant. दिस विल बी मोर क्लियर जब हम आखिर में जाके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. उस वक्त हम दोबारा इन कॉन्सेप्ट्स पे आके क्लियर करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट हैव एन आइडिया एंड कीप पुटिंग दीज वेरिएबल्स इनटू योर माइंड जस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग, ताकि जब ये इनके ऑन कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह उससे ये चीज़ें और क्लियर होंगी. बाय डेफिनेशन gt equals to gt minus 0 is the output at time t due to an impulse input applied at time 0. So the condition for a linear time invariant system to be causal is g of t is equals to 0 for t less than 0. तो इसका मतलब है कि what we are talking about is कि causal system है और इसकी input at t equals to 0 से पहले जो है it is all equals to 0. Now this is an example. Unit टाइम डिले हमने स्टडी किया था एग्जाम्पल 2.1 में. दैट एग्जाम्पल इज रिपीटेड हियर. मैंने दोबारा यहाँ प्लेस कर दिया. सो द यूनिट टाइम डिले सिस्टम स्टडीड इन एग्जाम्पल 2.1 इज अ डिवाइस हुज आउटपुट इक्वल्स द इनपुट डिलेड बाय 1 सेकेंड. ठीक है, सो ये एक वो सिस्टम है. आप यूँ समझें कि इसके इनपुट पे आपने अप्लाई किया, नॉट यू ऑफ टी आपने अप्लाई किया था, और चूंकि इसका डिले जो है डिले इज़ 1, डिले 1 का डिले इसके अंदर 1 सेकेंड कह लें या जो भी यूनिट्स है, तो इसकी जो आउटपुट है वहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी वो इफ़ दिस इज टाइम और आपने अप्लाई किया इसको यहाँ पर, लेट्स से ये सिग्नल आपने अप्लाई किया यू ऑफ टी 0 सेकेंड्स के ऊपर, लेकिन जो आउटपुट है उसके ऊपर ये सिग्नल अपेयर होगा वाई ऑफ टी. किस वक्त अपेयर होगा? नॉट एट 0, ये अपेयर होगा आपके पास यहाँ पर. ठीक है, सो वी कैन सी दैट देयर इज अ डिले, अदरवाइज ये है सेम. तो सेम एम्पलीट्यूड है. लेट्स से दिस इज 5 वोल्ट्स, दिस इज आल्सो 5 वोल्ट्स, लेकिन ये अपेयर कब हुआ? सो देयर इज अ डिले इन अपीयरेंस. ये दिस इज द डिले, सो दैट्स व्हाई यू ऑफ टी इक्वल्स टू दिस. The output is simply the input delayed by 1 second. In order to determine output y of t और तमाम वो वैल्यूज के लिए जिस t greater than t naught, right? So and for u of t, so we need the information for u of t from t naught to t naught minus 1 से लेके t naught तक. Therefore the initial state of system is, इसमें अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो डिले सिस्टम्स होते हैं उसमें हमें इस टाइम से पहले की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. तो इसमें हमें ये दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम. वजह उसकी है कि ये डिले सिस्टम है, और डिले सिस्टम होने की वजह से वी हैव टू नो द वैल्यूज, ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर वी सी द आउटपुट. तो हमें जो आउटपुट नज़र आ रही है वो आउटपुट नज़र आ रही है
लेट्स से टी पे, ठीक है, टी इक्वल्स टू टी नॉट पे, तो इक्वल्स टू टी नॉट से लेकर जो पिछला पूरा आपके पास है. सो दिस इज अ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. कंसिडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम. ये यूनिट टाइम के लिए सिस्टम है और इसका वाई आउटपुट को लेके हमने एक क्लोज लूप सिस्टम बनाया है. दिस इज the reference, this is a positive feedback, and then we have an amplifier A multiplied and U. So it consists of a multiply. This is a multiply. This again A है, एक unit time delay system है. Now, what type of system is this? This is the question. Is it a MIMO? Is it a CMO? What type of system is this one? Is this a CISO or MIMO? And the main question that is here is R is the input to the feedback system. और अगर R को हम delta कर दें, remember delta क्या था? Delta आपके पास एक impulse है. Then the output is the impulse response of the feedback system, and that will be equals to what? जो आपका feedback system का आएगा, that will be क्या है? पहले the pulse will come here, and when pulse comes here, and then from here to here it will be multiplied with A. तो यहाँ पे A से multiply होगी, and we are talking about G. So G basically is the output, right? G f of t. तो output पे पहले जो आपको जो value नजर आएगी, that will be what? That will be a delayed one. तो U of t delay की वजह से हो जाएगा U of t minus 1. Since we are talking about the impulse response, so this will be what? U basically क्या है? Delta है. So this will be if the input is delta of t, output जो होगी वो होगी delta t minus 1. So we have delta t minus 1 or A amplitude is being multiplied here. अच्छा, now we have this value A delta t minus 1. अब ये value वापस travel करके जाएगी, goes here, और ये फिर multiply होगी इसके साथ, A के साथ. तो this will become like A square, और delta t minus 1 जब delay से गुजरेगा तो it will become delta t minus 2. So that's why आपके पास यहाँ पे delta t minus 2 है और A square है. Now this value goes back and then it will be multiplied with A again, so A cube, और जो delta t minus 2 है that will become delta t minus 3 and so on. तो अगर हम देखें इन इसको जो फॉर्मूला बनेगा, that will be A to the power I delta t minus I, and I from 1 to infinity. Okay, so this is like a positive feedback loop. Assume करें कि अगर R हमारे पास 0 हो, for easier case, for all the t less than 0. In that case, the output will be given by ये जितना भी आपके पास impulse response आ रहा है times R of t df tau. इसको अगर हम summation में करेंगे in discrete form, this will become A from 2.9 from 0 to t delta t minus tau minus I R tau delta, or this is further simplified, and finally we have this equation here. So the question is कि क्या ये जो system है ये lumped है, distributed है? The answer is, since the unit time delay system is distributed, therefore its feedback system is also distributed. और अभी हमने ये देखा कि आपके पास infinitely many जो है उसकी states आ रही हैं, तो ये distributed system है, ठीक है? So this was the question example 2.3. Just to have an idea, you don't need to remember everything from here. ना ही इसको हम बाद में और discuss कर रहे हैं. But this is important to understand के what are the distributed and lump systems और ये किस तरह से responses generate करते हैं. Next we have the transfer function matrix. Now in the Laplace transform is basically a very important tool. LTI जब systems की बात करते हैं तो हमें Laplace transforms हम easily apply कर सकते हैं और they help us a lot. Laplace transform अगर calculate करना हो तो very simple. You have a signal here. अगर y of t जिसका आपने Laplace लेना है, put it here,
and integrate it over this integral e to the power minus s of t d of t. Causal systems के लिए हमारे पास g of t जो है वो 0 होता है for all the t values less than 0. या अगर shifted है तो delayed है तो g t minus tau. In that case tau is your focal point for the time. Thus tau से पहले की जितनी भी values होंगी वो it will be 0. Thus the upper integration limit can be replaced by infinity. Next, substituting 2.8 and interchanging the order of integrations, we obtain अब इसकी जगह पर we replace y of t here. अगर आप देखें तो ये y of t basically हमारे पास कहाँ है, 2.8 was here this one. ठीक है, तो इस वैल्यू को 0 to t g of tau u of t minus tau d of tau convolution integral. So the convolution integral is here. Convolutional integral, and then we solve it. I will directly jump to the end result here. अच्छा, जब इसको solve कर रहे हैं तो then we have a little manipulation. Integrations को हमने change किया है, and the d of t will be replaced. इसको आप अंदर लेके हैं और जो tau है variables इसको आप बाहर लेके आ गए हैं. ठीक है, and then we introduce a new variable t minus tau, so that कि इसकी जगह पे अब आपके पास नया variable आ जाएगा integration का b. And then we have again using the causality conditions to replace the lower integration limit inside the parenthesis from b to minus tau. Minus tau से लेके 0 तक, the integration becomes independent of tau and the double integration becomes this. Might be boring but we have to go through it. हम जब numerically solve करेंगे then it will be easier. बस formulation एक दफ़ा देख लीजिए. So होता ये कि आपके पास integral जो है वो different, we will have two Laplace integrals here. तो हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं. बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि दिस इज द Laplace transform of the impulse response and the Laplace transform of the input signal will result in the Laplace transform of the output. इसमें ये जो आपके पास था impulse response वाला, this is called the transfer function of the system as well. The impulse response is also called in time domain, in the frequency domain, impulse response in the frequency domain. आप कह सकते हैं कि this is basically the transfer function of the system. लिहाजा the transfer function is the Laplace transform of the impulse response. So this is also stated here, well written. Okay, transfer function is basically nothing else. Transfer function is the Laplace transform of the impulse response. ठीक है? And conversely, we can say that कि impulse response क्या होता है? Impulse response क्या है? It is the inverse Laplace transform of the transfer function. ठीक है? So this statement is very important. And from the whole lecture, what I want you is to take away this message, right? So there is very important remark here that let me read it first. We see that the Laplace transform transforms the convolution integral into the algebraic equation. This is very interesting कि integral से वो आप एक simple algebraic equation में उसको convert करते हैं. In analysis and design, it is simpler to use algebraic equations than to use convolution. ये बहुत अच्छा, बहुत ही important result है. This is very, very important result. और we will do some exercises to जो इतनी simple तरीके से solve होंगी जिससे we should appreciate the benefit of using this one. Thus the convolution in 2.8 will rarely be used in the remainder of the book. This is a very good news. Okay. But having a good understanding is important so that in future in more deep courses आपको ये चीज़ benefit दे. But this is the core concept that will help us in developing advanced methods of analysis and design courses. Especially जैसे मैं आपको mention कर रहा था data analysis and AI anomaly detection estimation में ये चीज़ बहुत benefit देगी. So
Right now we are not going to go back and use the convolution integrals. Um, लेकिन we will visit them again in the next courses, in future courses of estimation and anomaly detection. तो वहाँ पे आप इसका connection proper बना सकेंगे. Now let's move to some formal जिसको formalize करते हैं for multiple inputs. So for multiple inputs, multiple outputs, P inputs and Q outputs हैं. अगर किसी system की we have more than 1, 2 and up to P inputs हैं, और इसी तरीके से अगर आपके पास आउटपुट जो है वो भी 1, 2 एंड अप टू Q आउटपुट्स हैं. सो इन दैट केस the system transforms to a matrix form, or we will have the transfer function matrix. So this G, which is P by Q matrix, it is called transfer function matrix, or simply transfer matrix of the system. Okay, so next let's review 2.4 example 2.4. इस example में क्या है कि consider the unit time delay system जो अभी हमने देखा. Unit time delay system, its impulse response is delta t minus 1. इसका अगर हमें Laplace transform लेना हो तो Laplace transform of this one is very simple. This is the function f of t. ठीक है, जिसका Laplace transform लेना है तो आपने यहाँ place कर दिया. This is the Laplace transform formula. और and then what we do is, चूंकि इसका मतलब क्या होता है, this multiplied by this one is what, इसको अगर आप इंटीग्रल लेंगे तो that will be 1, और the answer will be what is, इसका जब आपने इंटीग्रल लिया e to the power minus st we have at t equals to 1, at t की वैल्यू को जब आपने 1 प्लेस किया तो we finally got e to the power minus s. So this is the transfer function, or this is an irrational function of the s. This is how हम transfer function unit step पे निकालते हैं. Example 2.5 को भी देख लें. Consider the feedback system. Same 2.5 में transfer function of the unit delay element, इसका जो transfer function आपके पास आया, it is e to the power minus s. ठीक है, unit time delay का. So the transfer function, इसीलिए जब ये लिखा होता है तो हमें पता होता है कि जो delay है, delay is equals to 1 seconds. ठीक है. See the transfer function from r to y, can be computed directly from the block diagram. इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपका TF. तो ब्लॉक डायग्राम से अगर आप कैलकुलेट करें so that will be very simple. If you recall, the transfer function is what, the forward path element. ठीक है, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा g of s, let's say, let me clean it here. Okay, so the transfer function will be g of s upon 1 minus hs and g of s. ठीक है, 1 plus basically. इसमें feedback है minus में, so h is here, h of s is here, which is equals to 1. ठीक है, और प्लस के केस में यहाँ पे माइनस आना चाहिए, so I will remove and put minus here. यहाँ माइनस आना चाहिए, and this is our total g of s. तो g of s basically क्या है, g of s जो है वो है a times this plant transfer function, which is e to the power minus s, 1 minus 1 times जो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास फॉरवर्ड में आ रहा है, that is what, a times e to the power minus s. So this goes to ae minus s upon 1 minus ae minus s. Okay, so block diagram analysis से हम, although convolution integral is playing its role, लेकिन हम इसको s domain में लाने के बाद we can easily solve it. Now this can be obtained by taking the Laplace transform of the impulse response. Impulse response का Laplace transform भी ले सकते हैं आप, and this is how it is being done. So this is another way.
ठीक है, यू कैन सी के दिस इज हाउ इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर वे अगर आप इम्पल्स रिस्पॉन्स को यूज करते हैं. सो वी विल प्रेफर द अदर वे ट्रांसफर फंक्शन. नाउ देयर इज वन रिमार्क हियर, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ 2.12 दिस वन. अब इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम देखें तो दिस इज इरेशनल फंक्शन ऑफ एस. दिस इज सो बिकॉज द फीडबैक इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो उसका इरेशनल बनेगा. If a linear time invariant system is lumped, then its transfer function will be rational. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस इज irrational function. अगर आपके पास lump system होगा तो वहाँ transfer functions rational बनेंगे. We study mostly lump system, thus the transfer function we will encounter will be mostly rational functions of S. तो वो वाला function irrational function जैसे अभी हमने देखा, तो we will not going to see it more. अब ट्रांसफर फंक्शंस जो है वो प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं, स्ट्रिक्टली प्रॉपर हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन. और लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन. नाउ इट कम्स टू ट्रांसफर फंक्शंस. तो ट्रांसफर फंक्शंस जब आते हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि क्या वो प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं या स्ट्रिक्टली प्रॉपर हैं. ये इनसे मतलब क्या है, लेट्स सी देम. Every rational transfer function can be expressed as this. उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप अलग अलग कर दें. यानी दिस इज इक्वल्स टू जी हैड से हम रिप्रेजेंट करें ट्रांसफर फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस डोमेन एन ऑफ एस और डी ऑफ एस के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, एनीथिंग. फॉर एग्जांपल इट कैन बी एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन एस प्लस टू. ठीक है, तो ये जो है नोमिनेटर हो जाएगा और ये जो है आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा. नाउ एन और डी ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स ऑफ एस है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिनोमियल है एस प्लस वन, यहाँ पे पॉलिनोमियल सेकंड ऑर्डर का बन जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो. सो लेट्स यूज डिग्री, DEG, डिग्री टू डिनोट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. देन जी हैट ऑफ एस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो डिग्री का मतलब है कि फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, एस प्लस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, और यहाँ पे जो है बनेगा ये दिस विल बी सेकंड ऑर्डर डिग्री. ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी एस स्क्वायर, पहला एलिमेंट प्लस देन 2 ऑफ एस प्लस 2, सो दिस विल बी एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. सो ये पॉलिनोमियल जो है इसके अंदर जो डिग्री है इसकी जो डिग्री है दैट इज 3, दैट इज 2. सो दिस इज व्हाट द डिग्री मींस हियर. तो डिग्री ऑफ द ds, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अभी हम इस केस में देखें जो हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है दिस इज इक्वल्स टू 2 और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है दिस इज इक्वल्स टू 1. सो इफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, देन and implies that g infinity equals to 0 or non-zero constant, then it is called a proper one. पर ये तो हमारे पास जो है ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है. स्ट्रिक्टली प्रॉपर का केस क्या है, जिसमें आपके पास जो है डिग्री, फॉर एग्जांपल ये हमारा केस जो है वो ये है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर है. ठीक है, एंड और इसमें होगा क्या कि आपके पास जो इसका जो एम्पलीट्यूड है इन्फिनिटी पे, दैट विल बी 0. बाई प्रॉपर डिग्री अगर डिनोमिनेटर की बराबर है नोमिनेटर की डिग्री से, देन इट इज कॉल्ड बाइपोलर. और इम्प्रॉपर डिग्री जहाँ पे आपके पास degree of denominator is less than degree of numerator. For example, if we have this thing s plus 1 s plus 2 upon s minus 3, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिग्री इसकी improper है. So what is wrong with the improper transfer function? Improper rational transfer functions will amplify the high frequency noise. ये एक सबसे important issue है, which is often exists in the real world. Therefore, improper rational transfer functions rarely used in the practice. High frequency, क्योंकि noise बहुत ज़्यादा exist करती है आपके पास और in the real world, तो अगर आप improper use करेंगे improper rational functions में क्या होता है कि आपके पास noise जो है वो high frequency noise है वो बढ़ा देता है, तो अभी avoid. Now, चूँकि बात करना है ट्रांसफर फंक्शंस की, तो हम पोल का डिस्कशन एक दफ़ा ज़रूर करेंगे. पोल्स बेसिकली क्या होते हैं, पोल आपके पास जो हैं दे आर दी प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वैल्यूज हैं. द पोल्स, देयर आर बेसिकली टू थिंग्स.
जब आप इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड जीरोस, क्योंकि इस पे आपकी वैल्यू जो है सिस्टम की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं वो कहलाते हैं पोल्स। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो आपके पास इसकी वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। सो वन गोज टू ज़ीरो, द अदर केस गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, अगर गेन को अलग करना है तो दिस इज कॉल्ड जीरो पोल गेन फॉर्म, जिसमें सारे जीरोस आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोल्स आपको अलग नजर आ रहे हैं, p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और गेन आपको अलग से k नजर आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्म, और इसको हम निकाल सकते हैं इस मैटलैब के अंदर बाय यूजिंग दिस इक्वेशन tf, बाय यूजिंग दिस कमांड ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल जीरो फॉर्म। न्यूमरेटर आप प्रोवाइड करें, डिनोमिनेटर तो आप कोई भी, लेट्स से इफ यू प्रोवाइड इट लाइक s plus 1 comma s plus 1 s plus 2 s square plus 2 फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये इसको प्रोवाइड करेंगे ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल, सो द मैटलैब विल रिटर्न इसके अलग अलग जीरोस, इसके अलग अलग पोल्स और इसका गेन ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस थिंग। अगर ट्रांसफर फंक्शन ये है तो उसका दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन g hat of s। ठीक है, अगर आप ये प्रोवाइड करते हैं मैटलैब को तो मैटलैब विल रिटर्न द इंडिविजुअल zeros, poles and the gain. Okay, so this is the last slide on today's topic, rational matrix. Uh, so our rational matrix G is said to be proper if every entry is proper. क्योंकि आप जब इसकी बात करेंगे तो इसमें आपके पास 1 upon s plus 1 s plus 2 upon s square minus 3 s plus 4 s minus s plus 1 upon s square plus 4 s minus 1 upon s square minus 3s plus 2। तो ये इस तरह से होगा। तो इसमें इंडिविजुअली every function every should be proper, अगर इसको आप पूरे को प्रॉपर कहेंगे तो। और if this is infinity, s जो स्टडी स्टेट है, this means स्टडी स्टेट। ठीक है, स्टडी स्टेट वैल्यू is zero or non-zero constant. It is strictly proper if its every entry is strictly proper. ठीक है, and this if a rational matrix is a square and if both g of s and its inverse are proper, then G is said to be biproper. So these are the definition for proper, improper. इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस just as a reference I put it here. Maybe we will use it. So there are a number of ways of defining the zeros of G. We call lambda as a blocking zeros, and we also have some transformation zeros. We will come back to them in realizations. Okay, so this ends our lecture, और next lecture जो है उसमें हम स्टेट स्पेस इक्वेशंस को देखेंगे, और इस तरह से स्टेट स्पेस इक्वेशंस यानी ट्रांसफर फंक्शन से आप स्टेट स्पेस में कैसे जा सकते हैं और स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट विद यूजिंग सम मैटलैब कमांड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑपएम में अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो किस तरह से की जाएगी। एग्जाम्पल, देयर इज वन एग्जाम्पल हियर, or it's interesting example, and then this is very important topic about linearization के non-linear systems हैं उनको हम linearize किस तरह से करते हैं, what are the Jacobians that we are going to use, और non-linear system को linearize कैसे करना है, and then we will have few examples like this one, example 2.7, 2.8, और finally you see we have this x dot here, ये पूरा A matrix है, and then we have X, then we have P matrix here and the U, and we have C matrix है, इसको हम simulate करके देखेंगे for P values. So I will try to use MATLAB in next lecture so that कि हम इनके इन system को simulate करें। ठीक है, 2.11, and I put every example here to complete the topic, so that इनको सभी examples मैं आपको run करके दिखाऊंगा, and then this comes the another topic about the discrete time,
डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स किस तरह से हैं, इनकी हम सिमुलेशन किस तरह से करेंगे. Input output description, there is one example, 2.1415 irrational functions, just a quick go through it. And then the state space equations, how to find the state space equations, or from Z. And finally we will have some concluding remarks and then the selected problems. Okay, so I will end it here, coming back on the previous slide, and then I will turn it off. कि हमने क्या किया था आज. We actually studied as a review. So we ended here. ठीक है. Formally हमने देखा कि किस तरह से what is the back end of the linear time invariant system. State space से हमने अब दोबारा start किया था state space से. और state space में these are the important three characters, x और इसका x dot, u, y, a, b, c and d. And then we discuss about time invariant case or input output description, some examples, transfer function matrix, another example 2.5, the easier way, then the transfer function के कौन से proper हैं, improper हैं, and what is the importance की क्यों हम transfer function, then the state space will be our next topic. Thank you very much.